बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वीं की इंग्लिश में से पोएम है ट्राई अगेन, जो कि विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है, उसके स्टैंज़ा की पैराफ्रेजिंग को करेंगे। पैराफ्रेजिंग की डेफिनेशन जो है वो एक अलहदा से लेक्चर है जो आप जो है चैनल में से देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं हम स्टैंज़ा की पैराफ्रेजिंग की तरफ। सबसे पहले हम स्टैंज़ा जो है स्टैंज़ा वन को देखते हैं। दिस अ लेसन यू शुड हीट, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। देन योर करेज शुड appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again। तो इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। There lies a great lesson worth attending in the fact that if you fail in your first attempt, you should try again. It will be a way to regain your lost courage and you will become steadfast. In this way, you should be fearless because trying again will bring definite success for you। तो अब चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। Once or twice, though you should fail, if you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we did not win the race. What should you do in this case? Try again। तो इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। You may get fail once or twice in your attempt, but if you keep on trying again, success will lick your feet at last। If we fail in achieving our goals in the first attempt, it is no way shameful to make another attempt. It is the best way to reach our destination। Let's move to stanza number 3। If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view, try again। तो इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। इफ़ यू फील दैट यू हैव अ वेरी टफ जॉब, यू शुड मेक another attempt। There will come a moment when you will certainly get your reward। All the men of determination succeed in achieving their goals by trying again patiently। Why it cannot be possible for you to reach destination by keeping this golden rule in your mind। तो इसके साथ साथ हमारे पास इसका एक क्वेश्चन जो है वो मेन आइडिया का भी आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो मेन आइडिया ऑफ द पोएम ट्राई अगेन। ट्राई अगेन इज द मैसेज ऑफ द पोएम। इफ वी फेल, we should not be sad. We should not shun working. Rather, we should make better efforts to succeed। Our constant labor would finally yield the sweet fruit of victory। उम्मीद है कि आपको इसकी पैराफ्रेजिंग और मेन आइडिया की वजह से पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।